बताइए आपके कमर्शियल कनेक्शंस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं एमईएस में? Sir, commercial connections are including all the activities which we are doing in commercial, sir. All are being used by Government of India defense employee and are being provided by defense employee. बताइए, आपका जो सवाल है उसको समझने की कोशिश करिए पहले. सर, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है. यस सर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी करती है जिसके लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन लगता है? Sir, commercial activities to include, sir, we have a military hospital, sir. That is a commercial activity. My lord. Wait, let him answer. Sir, as per MPSCB, we have two different heads, sir. One is all the quarters in which married army men are living, sir. We call them domestic purpose, sir. Rest everything is under like Government of India. What is the classification given by the electricity authority for taking a domestic connection and a commercial connection? Sir, for domestic connection, all those married accommodations are included in domestic connection, sir, or residential user. Unmarried को domestic नहीं, unmarried will not be said to be in a domestic accommodation. ऐसा है क्या? Sir, एक बैचलर है, वो रहता है आपके क्वार्टर में, तो वो क्या जो है डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं कहलाएगा? Sir, because all those who are living unmarried, sir, they are not in a quarter, sir. They are living in a line, barrack kind of. Barrack. तो yes. Barrack में क्या कमर्शियल एक्टिविटी होती है जिसके कारण उसको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा? Barrack are not included in commercial activity. They are residential. They are domestic connections. Sir, but we are not giving them bills, sir. They are not authorized to pay the electricity bill, sir. They may not be authorized to pay the bill. That is not authorized. You are not charging the residents of the barrack, sir, and you are bearing the expenses of the electricity used in the barracks. Yes, sir. ठीक है, sir. But will it make it a commercial connection? No, sir. तो ये क्लासिफिकेशन क्या है? समझ लीजिए, एफिडेविट फाइल करिए. कितने दिन में एफिडेविट फाइल करेंगे? पहले आप नॉर्म्स बताइए कि एमपीवी की क्या नॉर्म्स है डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, कमर्शियल कनेक्शन के लिए, और आप क्या एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए कमर्शियल कनेक्शन लिए गए हैं. आप बताइए मैडम. My lord, this bifurcation has been made by the MPEB. तो क्या बाइफर्केशन है समझिए, उनसे भी समझ लेंगे ना. So they will answer. How? You also answer because you are using those connections. ऐसा तो नहीं है कि आप बिगर, अगर आपका ये कंटेंशन है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं. देश के लिए वो चिंताजनक बात है कि आप बिगर समझे पेमेंट कर रहे हैं. सर, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कौन सा कनेक्शन कमर्शियल है, कौन सा डोमेस्टिक है, और व्हाई शुड यू पे फॉर कमर्शियल? What we are saying, we are government of India, we are exempted from any. वो समझ गए, वो आपकी कल आर्गुमेंट हो चुका है. Permission of my lord, may permit me to read once Article 287. पढ़ लिया, कल पढ़ लिया था, फिर पढ़ लिया. My lord, allow me to read once. प्लीज पढ़िएगा. Yes, sir. नहीं, पहले मेरी बात का उत्तर आना चाहिए कि कमर्शियल कनेक्शन क्यों लिया है आपने? हमने लिया नहीं है, इनने बाइफरकेट किया है. आपने कभी अप्लाई नहीं किया कनेक्शन के लिए? हमने तो इनका 6.1 you never applied for a commercial connection? सर, हमने इनसे लिया है 2 LT कनेक्शन, 244 LT. Sorry, yes sir. 2 ST connection and 244 LT connection. They came and bifurcated. LT and ST का क्लासिफिकेशन अलग है. LT is low tension, ST is high tension. Yes, that is for different purpose, and the classification of commercial and domestic is for different purpose. Yes, sir. When we, sir, हाँ बताइए. when the joint survey was carried out between NPSCB and MES, so they only came up with the conclusion that all those accommodation which are not being used by married people are to be considered as. Where is that Panchnama? Where is that joint inspection report? Sir, well, you have? Yes, bring it, please bring it. Married my lord 287. हाँ पढ़िए. And I would also request my lord, if my lord come to page 21 of their reply also. पहले 287 पढ़ना है कि पहले page 21 पढ़ना है? पहले मैं 287 पढ़ूंगी, establish करूंगी इससे. पढ़िएगा. Yes. Clause A पढ़ रही हूँ sir. Clause A. जी. Consumed by government of India or my lord, I am here. Consumed by. OIC is also connection. बुलाइए ना OIC को. आपके कौन है OIC? Till the OIC comes, may I submit? आने दीजिए, सुन लेते हैं. आपको भी सुन रहे हैं अभी. आपको हम बताइए सर. इसे मान लीजिए कि बाइफरकेटेड कर दिया. बाइफरकेटेड करने के बाद कमर्शियल जो बल्कि हो जाए उसमें कैसे करना है?
सर इसमें मुख्यतः दो तरह के बाइफरकेशन है, एचटी और एलटी। मैं एलटी की बात से चालू करता हूँ। एलटी में जो घरेलू कनेक्शन है, डोमेस्टिक कनेक्शन है, उसके ऊपर ड्यूटी हम चार्ज कर रहे हैं। जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है, जिनको अपन कमर्शियल दूसरी भाषा में कह रहे हैं, उन पे हम ड्यूटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये मानते हुए कि गवर्नमेंट जो यूजर है, ये कंज्यूमर है, वो अपने कामों के लिए यूज कर रहा है। दो बाइफरकेशन, इसमें एलटी में कोई विवाद नहीं है सर। डोमेस्टिक पे ले रहे हैं, नॉन डोमेस्टिक पे नहीं ले रहे हैं। अब हम आते हैं, इनकी ओर से भी कोई विवाद नहीं सर, ले रहे हैं ये रिकवरी 59 लाख। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट जी। एलटी में कोई विषय नहीं है सर, क्योंकि वो बाइफरकेटेड है जी। वो डोमेस्टिक वाले अलग है, तो डोमेस्टिक में हम ले रहे हैं। जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है, उस पे हम नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर। अब बात आती सर एचटी के ऊपर में। एचटी के दो कनेक्शन इनके पास में है, और ये दो कनेक्शन जो है, जो टैरिफ जो हमारा कैटेगरी HV6 उसके अंतर्गत लिए गए हैं। HV6 ये कहता है बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली, और उसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटी की रिस्ट्रिक्शंस भी डली हुई है। 20% तक कमर्शियल एक्टिविटी अपन ही रिलेट करना है, उसके ऊपर जाओगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी। तो एचटी में क्लियर कट ये लिया हुआ है कि क्योंकि वो मिक्स लोड है, हम बाइफरकेट नहीं कर सकते। एमईएस भी खुद उस कनेक्शन को पर्पस बार बाइफरकेट नहीं कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। ये चीज जो है ऊर्जा मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, इसके जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, इन्होंने भी यही उल्लेख किया हुआ कि जब तक ये अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं, तब तक के मिक्स लोड पे जो भी कंजम्पशन आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। एज एंड व्हेन जब सब अलग कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा अलग अलग। जो कमर्शियल पार्ट होगा उस पर नहीं लगेगी, और जो डोमेस्टिक पार्ट होगा उस पर लगेगी। ये क्लियर है सर? सर ये HV 6.1 टू बल्क टू रेसिडेंशियल कनेक्शन पेज नंबर, ये जो सर ये जो आर्ग्यू कर रहे हैं अपने रिप्लाई से, इन्होंने हमें HV 6.1 बल्क रेसिडेंशियल कनेक्शन दिया हुआ है सर। दे हैव ओनली दिस कनेक्शन, देयर इज नो स्पेसिफिक कनेक्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, so we had no option to accept this connection only. Therefore, my lord, we opted. but he's saying something different. You have not, no, Yes, you have not understood what he's saying. Yes, sir. He is saying that there are two categories of connections. One is LT connection, where the bifurcation is distinct. One is for domestic purposes and another is for non-domestic purposes. As far as non-domestic is concerned, they presume that it is being used for Government of India and therefore no duty is chargeable on it. As far as domestic is concerned, they are charging duty. Now coming to the HT connection, in HT connection, there are certain restrictions as per this HV6, where the bulk supply is for the purposes of residential uses, subject to ceiling of 20% for to be used for other than residential purposes, and therefore when there is no bifurcation between the domestic use and the official use or the commercial use, therefore the tariff will be charged on the complete supply under this HT connection. My lord, my number one answer to first query, my lord. First of all, the case is, my lord, domestic, non-domestic does not have any relevancy in this case. What is relevant? Duty is applicable to consumer. Who is the consumer here? As shown in this honorable court, the bill raised by them. So domestic connection से आप पैसा नहीं लेते? अभी आपके कप्तान साहब ने बताया, क्या शुभ नाम है आपका? Sir, मेजर सूरज प्रकाश सिंह। हाँ, मेजर साहब ने अभी बताया कि जो डोमेस्टिक्स जो है उसका बिल रेज किया जाता है। तो इनसे पूछ लिया जाए क्या ये बिल इंडिविजुअल को देते हैं क्या? बिल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल जा रहा है, हम सप्लाई कर। अब मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रही हूँ सर। अभी इन्होंने ऊर्जा मंत्रालय का बात की और कुछ कहा। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। P9 सर, मैंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू एक डॉक्यूमेंट फाइल किया है। जी किस आइए नंबर 11677 मिलोट जी। ये मैंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक बिल लगाया है सर। अगर मैं माननीय न्यायालय को पेज 6 में मिलोट में कम मिलोट बिलिंग डिटेल्स, सेकंड पैराग्राफ, बिलिंग डिटेल्स, हिस्ट्री, यस बिलिंग कितने बड़ी हिस्ट्री में सर? 6 नंबर पेज मिलोट, 6 नंबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 मिलोट रनिंग पेज 6 हाँ 6 यस। current consumption details, billing details, yes. Second one of billing details, it might not become left side. जी। Consumption type, industrial, residential. Residential के आगे लिखा है 2,21,340. जी। अब सीधे इसके आगे आइए सर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 0.
Can they bifurcate the constitution? Some of the state, they are not charging even for residential purpose. Here they are charging. So they should come out with the answer, my lord. That is why I am saying, my lord, duty is leviable to the consumer. Here, consumer is the government of India. Okay. The bill has been issued in the name of the government of India. We are supplying to the electricity to defense establishment. And the bills are being deducted from the salary of the individuals. No bill is being claimed through the name of the individual. Right. So this is my sole contention, my lord. Okay. Anything else? That's all. This writ petition is filed by the military engineering service. With respect, my lord. No, they are saying, my lord, they are not charging electricity duty on commercial connection, but the recovery has been made, my lord, on commercial connection also. That is 59,000. We will record their undertaking. Yes, sir. Claiming relief that a mandamus writ in the nature of mandamus be issued, quashing impugned orders dated 17/7/2020 and 21/7/2020, whereby electricity duty has been levied on certain connections taken by the petitioner organization. Full stop. Documents. Full stop. It is submitted that as per Article 287 of the Constitution, there is exemption from taxes on electricity. Full stop. It is thus submitted that since the consumer is Government of India, no electricity duty is payable. Full stop. It is thus submitted that bifurcation of connection as per use and then charging of duty is not proper, and therefore impugned action of the respondent state needs to be set aside. Next. Shri Suraj Singh, Major Suraj Singh. Yes. Major Suraj Singh, who is appearing along with the petitioner counsel, has placed reliance on the order dated, इसकी क्या date है इसकी? ये आपके चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो ऑर्डर है, ये लक्ष्य 17/7/2020, 17 July 2020, and submits that order is bad in law and deserves to be set aside. Next para. Shri वेद प्रकाश तिवारी along with Shri दीपक चौरासे DGM Finance submits that the provisions contained in Article 287 are being misinterpreted. Full stop. He submits that there are two categories of connections, one under LT category and another under ST category. Full stop. In LT category, there is a clear distinction between the connections used for domestic purposes and connections which are used for non-domestic purposes. Full stop. It is submitted that as far as non-domestic connections are concerned, no duty is being charged on them under the LT category because they are presumed to be used by the Government of India for its own consumption. Full stop. As far as domestic connections are concerned, admittedly, bills are being raised by the electricity authorities, and amount is bifurcated and recovered from the consumers from their salary, and that cannot be said to be the purpose of government of consumption by the Government of India. Full stop. It is further submitted that, next paragraph, further submitted that as far as ST connections are concerned, they have been operational under tariff schedule capital H, capital V -6, which is a category under bulk residential users. Full stop. It is submitted that since the title of tariff schedule HV-6
demonstrates that it is bulk residential users and it permits up to 20% of non-residential consumption of electricity, and it is not possible to bifurcate the two between residential and non-residential purposes. Therefore, as per the tariff plan, duty is being charged on the billing amount of the ST connection. Full stop. It is pointed out that the day it will be possible to bifurcate the ST connection into domestic and non-domestic purposes, then duty will not be charged on non-domestic purposes, treating it to be used by the Government of India.